My second question goes to Akshay sir. Sir, the excitement for the film is on a high, but it also comes at the heels of when another film of yours has got into some trouble with Paresh sir's exit in Hera Fairy 3. So I wanted to ask you, like, the fans have been so disappointed and they have said so many things, including calling Paresh sir foolish for taking this step of leaving this franchise. What do you have to say so as to calm the Okay, situation? well, let me first tell you one thing. What's your name? क्या बोलना है? Akash Bhatnagar. आकाश जी, सबसे पहले तो मैं आपको कहूँगा कि using this kind of word for one of my co-star, like a foolish word or something, I would not appreciate it. I would say that that's not right. He's been with me. I've worked with him for since last 30 साल से 32 साल से मैं उनके साथ काम करते आया हूँ. We are very good friends. He's a great actor. I really admire him. And जो भी कुछ है, I don't think so. This is a place where I'm going to talk about it because whatever has to happen, it's a very serious matter. It is a matter which is going to be handled by the court and things like that. So I don't think I'm going to speak about it here. Okay, thank you. अक्षय जी कुछ बताइए, तकरीबन हाउसफुल 5 कितना बजट होगा एंड कितने पैसे लिए आपने तकरीबन हाउसफुल 5 से? क्योंकि यहाँ पर रेड 2 के जो सबसे हाँ, पूछो बेटा. तकरीबन कितने पैसे लिए होंगे आपने साजिद जी से हाउसफुल 5 बेटा, के? अगर मैंने पैसे लिए होंगे तो मैं तुझे क्यों बताऊंगा? होगा। तू हमारा भतीजा लगता है जो तुझे बताऊंगा. हाँ, मैंने पैसे लिए, बहुत अच्छे खासे लिए, और फिल्म बनी बहुत अच्छे खासे बजट में बनी, बहुत मज़ा आया. आज खुशी का दिन है. तूने अपने रेट डालना है तुझे? नहीं, वो तो रितेश जी हैं? छोड़ना. चलो आगे, नेक्स्ट. हेलो. I have two questions. Firstly, my question goes to Nana sir. Sir, you have been a part of so many amazing यार franchises हिंदी में also. बोल, अंग्रेजी नहीं आती. Okay, sir. सर आपने इतनी सारी फ्रेंचाइज फिल्म्स की हैं, लाइक वेलकम हो गई, देन व्हाट इज दिस अबाउट, मतलब हाउसफुल 5 में ऐसा क्या अपील हुआ और आपको कैसे कन्विंस किया कि आप इस फिल्म का पार्ट बने? देखो, डायरेक्टर कौन है उस पर निर्भर करता है, और दूसरी बात है पैसे. तो मैं दोनों से खुश था, और जो रोल था वो बेहतरीन था. और मैं सच कहता हूँ कि इतने साल 12 साल तूने क्यों नहीं फिल्म डायरेक्ट की, मेरे समझ में नहीं आता. इसके बाद तो लगातार कर 12 साल, उसके बाद रिटायर्ड हो जा. लेकिन वो देख करते हुए हमको तो कुछ करना नहीं है. इन लोगों ने वो जिस तरह से वो स्लैपस्टिक की है, मुझे तो सीरियसली करना था, और वो जैसे करना था मैंने कर दिया है. अब देख लो आपको कैसा लगता है. Akshay sir, I have a question to you over here, same. Sir, after a very long time, we are seeing a slapstick proper comedy coming our way because there have been so many content films which are coming with you as well. You are also part of a lot of content films. So how do you view a slapstick film in today's time? I think if I would not be mistaken that slapstick comedy ये कोई ऐसी आसान कॉमेडी नहीं है. नाना साहब ने इतनी कॉमेडीज़ की हैं, रितेश ने इतनी कॉमेडी की है, श्रेयस, अभिषेक, they can vouch for it. They have been part of so many other comedies franchise. But let me tell you, slapstick comedy is very difficult. And this comedy, what we all have done, is slapsticks mixed with action comedy. It is physical comedy. I'm a huge fan of Charlie Chaplin. Huge fan. Trust me, I'm telling you. I even have his photograph in my wallet. And if you want to see it, I can show it to you. But I'm a huge fan of Charlie Chaplin because the way he does comedy without saying a single word, with so much of physicalness. So I think I said that kind of comedy, I am a huge fan of it. So this film has that kind of thing. And unfortunately, this kind of comedy doesn't get that, क्या कहते हैं उसका जो है ना, कदर नहीं मिलती उसकी, acclaim नहीं मिलता उसको. It is अवार्ड तो भूल जा बेटे, अवार्ड कहाँ से मिलता है. But it is very, very difficult to make people laugh when it comes to physical comedy and when it comes to slapstick comedy. That's it. I would just like to add फोटोग्राफ one thing. देखनी है क्या? I like to add one thing कि आपने जब बोला, Where's my wallet? है wallet? Sorry. नहीं, I just like to add one thing. जब आपने बोला कि कंटेंट फिल्म है और फिर कॉमेडीज है,
ये सोचना बहुत गलत होता है कि कॉमेडीज में कंटेंट नहीं होता. तो आई वुड एक्सपेक्ट. हाँ. Hello. In the center. Here. In the center. Here. पीछे लोग कैमरा में ज़्यादा ऊपर हाथ नहीं कर सकता. Can I have that wallet, please? Hi. Can I have the wallet? Hi. Please. This is But Ritesh, you have been the soul of Houseful franchise from the start. What do you think the audiences? Why do you think the audiences keep coming back to this film even after 5 films? What is that one thing that brings back the audiences? I think Abhishek Bachchan. We did part 3. People loved it. Part 4, we missed him, and he's back here with part 5. But I just feel that when we did Houseful, we never thought it would be a franchise. But I think, Sajid Nadarwala came up with a brilliant script, and then it became part 2, and then part 3. Sajid Khan directed that one, and we are here with part 5. I think the love from the audience has been immense for this franchise, and that's the reason we are back. Hopefully, people watch this film with as much love they have watched the previous parts, and hopefully we come back with part 6 again. Okay, thank you. Saundara, one question for you. This is your debut, big debut, and it's a big moment for you. Tell us what was your first day on set was, how was it, and who made you laugh the loudest on the sets? I think I'm truly, truly grateful and very privileged to be sharing a screen space with all the stalwarts. And, it's an amazing opportunity, and I feel truly blessed. And from the day one, I felt like we are on a picnic. Everybody's so warm, welcoming. Not even for a moment I felt like that this is my first big, film and opportunity. I'm so grateful to everyone who made me feel like, I'm just being part of this, and so respectful. So much to learn from, and I'm so blessed and grateful to be here. I'm so overwhelmed, and I definitely want to take the opportunity to just say thank you to my, God sister Varda. Because of her, and of course because of Sajid sir and everybody, I get to share this screen space with everybody I would have ever imagined to start with. And I'd just like to add, it did not feel like it was her first time Yes, on I screen. have worked a bit before, but yes, sharing a big screen that Yeah, way you with were big amazing. film. So Seriously, and we sweet. have a lot to learn from you too. No, thank you. Lastly, Akshay sir, this was such a fun ensemble cast. Any prank that went behind? All the pranks, trust me, was played by Jackie साहब. दादा, prank के बारे में बताओ. कौन रे आवाज नहीं है प्रैंक ये सबसे बड़ा प्रैंक है आवाज ही नहीं इतने बड़े बड़े जोकर है वहाँ गया सबसे बड़ा जिसने अभी बोला सफेद सूट में उसके सामने कौन बोल सकता है कुछ एक नंबर का बदमाश है खड़े खड़े शर्ट कब निकाल देता मालूम नहीं पड़ता किया है तूने बहुत बार हकीक तो प्रैंक ने इन लोग को देखने से ही मजा लिया है पूरा गेम में खो गया मनसूख खानी ने संभाला बाकी का पूरा गैंग तो अपना ये पुराना सब है कोई नया है बहुत ज़्यादा ही नया है मेरे बाजू में आजू बाजू बहुत खूबसूरत है गोली चाचा मेरे साथ है मेरा सीनियर जिसकी मैं बहुत इज्जत करता हूँ बहुत प्यार देता हूँ बाकी किसके बारे में बोलूँ सब अपने लोग ये बड़ू आप लोग अपने खाली लेवल अलग अलग लगे ले रहे सबको सबके ऊपर एक लेवल है बाकी वही छे सुबह मालूम पड़ता है ऑल माई लव टू यू हाँ बाबा छोटी बच्ची है क्या रे हाँ बाबा मिसिंग माई हाँ माँ मेरे बाप बच्चा मारेंगे एक दिन सबका बाप कोई शक ही नहीं भिड़ू बहुत मज़ा आया मेरा भिड़ू है ही नहीं आज संजू बाबा आया नहीं नो प्रॉब्लम मगर वो मैं अपने सामने ही है ये शुड टेक हिम उनका शूटिंग कहीं चल रहा है मगर हम लोग का जोड़ी पिक्चर के अंदर है और बहुत हम लोग ने एक दूसरे को बहुत पुरानी बातें भी की नहीं भी की मजे लिए अब तुम लोग भी लो मेरी जान कुछ ज़्यादा बोलूँगा ना पकाऊंगा नहीं बड़े बड़े बोलने वाले जैसा कि ये बोल बाबा बोल सफेद सूट और राइटर बाबा मेरा राइटर एक बस क्या फरहाद एक बार तो थोड़ा दिखा दे